Hello everyone, welcome to today's current affair session. So today we will have current affair for as we have started our current affair session for interview guidance program. So we will continue with that. So this would be the fourth class for the current affair session. So let's begin. So the first current affair for today's class is China's strings of pearl strategy fuel security concern in India. So this news has released on July 9th, that is for 2025. So we can see, like for example, in this whole PPT and through this CA session, which is a current affair session, I would like to discuss the current affair which were released in the last year, plus which may be uh, a little bit important towards your interview. So we will see I have put the news as it is in the PPT, but we will discuss about its relevance, how it will be asked in your interview. Okay? So since the first news says China's string of pearl strategy fuel security concern in India, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो न्यूज अपने आप में इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली है ही, ठीक है. इसके अलावा what are the important things which we can take from this current affairs? So let's read a little bit about this news. China's string of pearls strategy may pose serious security concern for India in the days to come. The strategy is China's strategy initiative to develop a network of military and commercial facility in the Indian Ocean region. अब ये न्यूज आपकी करंट अफेयर का पार्ट है, बट इसमें अगर हम लोग मोस्टली देखें तो वी हैव टू सी द लोकेशन. ठीक है, तो कौन कौन से पोर्ट में एंड कौन कौन से पोर्ट के थ्रू चाइना इज गोइंग टू पुट दैट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. ठीक है, एंड इसके अपोजिशन में जैसे कि हमारे पास वी कैन सी द लोकेशन है जिबाउती, राइट, यहाँ पे मालदीव्स, राइट. उसके बाद वी कैन सी द पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका, दैट इज हम्बनटोटा, देन चित्तागोंग, सितवे पोर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है. उसी तरह से ग्वादर पोर्ट. सो वी हैव बीन लिसनिंग टू दीज न्यूज थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का न्यूज, ठीक है, ये तो डिस्कस हुआ ही है हमारे न्यूज़पेपर में. इसके अलावा कि इसका लोकेशन, ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी लोकेशन के बारे में यहाँ पे मैंने सर्कल किया है या फिर मैप में आपको दिख रहा है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर इंटरव्यू सेशन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके से चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर इंडिया एज ए कंट्री के थ्रू वी हैव पुट अ opposition in front of China's string of pearls. ठीक है, so we have a term called, I hope you have heard the term called necklace of diamond, which was given by the Indian people. अब ये जो नेकलेस ऑफ पर्ल है इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ नेकलेस ऑफ पर्ल. ठीक है, सो इट्स जस्ट अ पोर्शन विच इट्स जस्ट अ strategy which is to oppose the China string of pearl. जिस तरीके से चाइना ने इंडिया के नेबरहुड कंट्री में छोटी छोटी मात्रा में उन्होंने अपने कमर्शियली एंड अपने मिलिट्री बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, उसी तरह से ऑन द अदर हैंड नेकलेस ऑफ डायमंड में what India has strategized that whatever position we have in the Indian Ocean region or in the South China Sea, जो भी हमारा पोजीशन है, we already have the position there, but इसको हम और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है, so that is what the strategy according to the necklace of diamond. ठीक है, so ये न्यूज आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है. Let's go to the next one, that is poverty free villages. ठीक है, अब ये जो पोवर्टी फ्री विलेजेस है इसका पहले तो वी हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमें पूछा गया है. तो एज आई सेड, न्यूज जितने भी आए हैं उससे डायरेक्टली ना भी पूछ के आपसे उनसे रिलेटिव चीजें पूछ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस पोवर्टी फ्री विलेजेस की. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, अंडर दिस स्कीम an amount of rupees 300 crore has been sanctioned
with the aim of bringing all the below poverty line families of the identified villages above the poverty above the poverty line. ठीक है, तो जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज हैं उनको उनसे ऊपर लाने की कोशिश की है थ्रू दिस स्कीम. And apart from this, what they have said, under this, leases will be provided to people living in illegal colonies. ठीक है. Apart from this, in the first phase of the scheme, the government will cover 5,000 villages, offering development initiative, self-employment opportunities, skill enhancement program, and financial assistance along with support in education and healthcare. तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी टू टेक द पीपल आउट ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है. So इसमें इन चीजों के अलावा what are the things which we can look upon और what are the things which is important, आप इससे और क्या क्या चीजें देख सकते हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में. जैसे कि अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका जैसे कि if we have to see regarding this scheme, so there is a scheme in the central government, not central government, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमें ये कुछ स्कीम देखने को मिलता है, दैट इज योर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोवर्टी स्कीम. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड द मेन पॉइंट वाज कि ये शुरू कहाँ हुआ था. ठीक है. दैट वाज स्टार्टेड इन अ विलेज ऑफ राजस्थान. ठीक है. बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ही स्टार्टेड इट टू ब्रिंग द पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन. सो इस वजह से ये न्यूज आपकी मतलब ये करंट अफेयर वाला पॉइंट आपके न्यूज में आया था. ठीक है. सो दैट वाज द स्टार्टिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, what are the important things and what are the important schemes, more another schemes which government is organizing to bring people above the poverty line. ठीक है. तो इसमें हमारे पास बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे कि एमजी नरेगा है. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे फ्री फूड फॉर पुअर, इस तरीके से स्कीम्स गवर्नमेंट ने दी है. ठीक है. फ्री मेडिकल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स दिए हैं. तो आप इन थोड़े से स्कीम्स को देख सकते हो. whenever they ask a particular scheme, they do ask a particular relevant scheme as well. ठीक है. तो उससे भी आपके पास करंट अफेयर का टॉपिक बन सकता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड topic, that is India refuses to sign SCO joint statement. ठीक है. So as I have discussed in the previous slides also, कि जो भी टॉपिक है आपके पास, अगर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बट दे में आस्क यू क्वेश्चन उससे उसके आसपास की चीजों को लेकर. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस करंट अफेयर वी कैन सी दैट इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन SCO joint statement. ठीक है. अब इसमें we can, if we read the news, India has refused to sign a joint declaration at the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting in Guangdong, China. Again, official sources said that the India is not satisfied with the language of joint document and there was no mention of cross-border terrorist activity. तो यहाँ पे फिर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है टेररिस्ट एक्टिविटी से. ठीक है. तो जैसे कि there are so many terms regarding terrorism which are in the news, they may ask you regarding that. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास क्वेश्चन बन सकता है HCO से. ठीक है. शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर एंड हाउ मेनी टेम्परेरी मेंबर्स आर देयर. ठीक है. इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स में आस्क ऑन द लाइन ऑफ HC ओनली. ठीक है. कि कितने कंट्रीज हैं, कब कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बना. ठीक है. तो इसके बेसिस पे यू मे दे मे आस्क द इंटरव्यू में आस्क क्वेश्चन टू यू. ठीक है. जैसे कि अगर कंट्रीज में पूछा जाए, हमारे पास इंडिया है, चाइना है, रशिया है. ठीक है. पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ SCO, प्लस वी कैन सी तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान. ठीक है. ईरान, दीज आर द कंट्रीज, बेलारूस, दीज आर द कंट्री हु आर पार्ट ऑफ SCO. तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उससे रिलेटेड चीजों को भी पढ़ना है. ठीक है. Let's move to the next part, that is Northeast first geothermal energy well drill in अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. अब ये जो न्यूज है नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट, अब इसमें आपको थोड़ी सी चीजें देखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन मे बी कि व्हाई दिस इज द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट वेल ड्रिल इन अरुणाचल प्रदेश. व्हाई इन अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है.
Then we can see the news regarding this. The Northeast first geothermal production well has been drilled in Dirang, Arunachal Pradesh, marking a significant advancement in harnessing renewable energy. Give me a second. Okay. So marking a significant advancement in harnessing renewable energy in the Himalayan region. So first of all, a one-liner question may be asked. The panel may ask you regarding this, that where is the first Northeast geothermal energy drill? So that is in Arunachal, and that too in Dirang district. Okay. Apart from this, what are the reasons that Dirang has become the significant place and favorable, or you can say a place which is suitable for the drill? ठीक है तो इस हिसाब से they can ask you apart from this again they can ask you a question regarding the seismic zone as well. ठीक है that recently Northeast and Assam has been included in the zone 6. Initially it was zone 5. ठीक है so similar thing may be asked in your question. So apart from learning about the current affair which is given in the news, इससे related question भी आपके पास आ सकते हैं. ठीक है so I'm not reading the whole news altogether because uh, as the information is already given in the slide, so you can read the slide and जो भी extra information होगी I will try to give you on the same ground. ठीक है so this is the news regarding Northwest first geothermal energy. Let's see the next news, that is the white collar terrorism. ठीक है अब ये जो न्यूज़ है ये बहुत दिनों से and it's a term which has been used repeatedly in the news कि white collar terrorism has been in a prevalent जो भी हम लोग को अभी दिखता है. ठीक है so let's see यहाँ पे बोला क्या है कि white collar terrorism refers to educated professionals using their expertise, positions or resources to support or conduct terror activities. तो यहाँ पे मैंने कुछ point लिखे हैं कि why the white collar terrorism is happening. ठीक है कि जैसे कि व्हील ऑफ रेस्पेक्टेबिलिटी. ठीक है जो भी प्रोफेशन के अंदर में वो ऑलरेडी रहते हैं सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैट कि एक इस हाई पोजीशन में रहने वाला इंसान कुड डू सच थिंग्स. ठीक है सो दैट इज वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीन फाइनेंसिंग. ठीक है जैसे कि टेरर के लिए टेरर एक्टिविटीज के लिए भी दे रिक्वायर monetary funds, which is again, if you are in a good position and you are getting that kind of money, no one will question you. Then urban anonymity. ठीक है so metropolitan life offers natural anonymity that supports discrete movements and secondary residence without the security common in smaller community. ठीक है apart from this, digital radicalization, encrypted platforms. ठीक है let professionals self radicalize in isolation through social media. तो ये सारे social media जो एक nowadays people are using for a profit, या तो फिर जैसे कि हमें बहुत सारे फायदे हैं तो हर किसी इन हर चीज के दो पहलू होते हैं. जैसे कि वन थ्रू विच वी कैन गेट द प्रॉफिट एंड अदर वन उससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है. तो इस तरीके से चीजों को लेके जैसे कि एजुकेटेड या फिर एजुकेशन हम किस पर्पस के लिए दे रहे हैं बट लोग उसको किस तरीके से नेगेटिवली यूज कर रहे हैं उसके बेस पे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है सो व्हाइट कॉलर टेररिज्म इज नथिंग बट basically a person who is already in a very high position or he who is qualified professionally, but instead of doing some positive thing they are indulged in some negative work. एंड ऐसे लोगों का बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि दे हैव समथिंग एंड सम discreet regarding the government and their policies. So mostly people who are anarchy or anarchist, they are mostly who get involved in the white collar terrorism. So you can see this news. Next one is inland waterways to receive major boats with German investment. ठीक है अब inland waterways in Assam, we can see that in Assam has a potential that it can boost its inland waterways. ठीक है
So through this we can also boost the tourism. So इसी में Sarvanand Sonowal recently has announced investment of over 4,800 crores for development of Assam inland waterways. This announcement was made during the Advantage Assam 2.0 summit in Guwahati. Again, you can be asked question regarding Advantage Assam 2.0. ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं. सो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि जब भी आपके पास जो भी न्यूज होगा उसके बारे में तो यू शुड बी हैविंग अ गुड or at least a brief knowledge about that thing. इसके अलावा भी what you have to see what are the key words which has been used in that particular news, उससे related भी आपके पास question हो सकते हैं. ठीक है, so this is how it becomes significant. So significance of inland waterways, we can see inland waterways are crucial for economic growth. ठीक है, जिसको मैंने आपको ये भी बोला था जिससे आप टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हो. They offer a cost effective and environmentally friendly mode of transport. The revival of Assam waterways neglected in the past is expected to trade and tourism. ठीक है? Expected to boost trade and tourism. The Brahmaputra and Barak River provide a rich network for cargo and passenger movement. ठीक है? तो आप इसको भी देख सकते हो. Let's move to the next part. This is the government initiatives where they have included Jalwahak scheme. So Jalwahak scheme के बारे में भी आपको देखना है. ठीक है? The next news is सोमनाथ स्वाभिमान पर्व. ठीक है, अब ये जो पर्व है न्यूज में था, अब इन दिनों भी चल रहा है रिसेंटली. सो वी हैव सीन दिस न्यूज रिगार्डिंग द सोमनाथ पर्व. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सोमनाथ पर्व. This is basically regarding the temple which is located in Gujarat. So let's read a little bit about it. So it has been launched to honor civilization resilience, marking 1,000 years since Mahmud of Ghazni's attack on Somnath temple. So about the Somnath temple, we have to have a little bit knowledge because they have given the festival's name. ठीक है, फेस्टिवल का नाम ही सोमनाथ टेम्पल के ऊपर पड़ा है. So we have to have some knowledge about it. So Somnath temple is revered as the first among the 12 Jyotirlinga of Lord Shiva, जो कि आपके शिव पुराण में मेंशन किया गया था. That it is the first Jyotirlinga among the 12 Jyotirlingas of Lord Shiva. It is located at Prabhaspatan, Gujarat, at the confluence of Kapila, Hiran and Saraswati river. Then next, इसमें mythic origin भी कुछ कुछ दिया हुआ है which you can just take a read. It is not necessary कि आपके इंटरव्यू में उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया हो, बट इतना आपको जानना है कि वेयर इट इज लोकेटेड. ठीक है, इसमें किसने अटैक किया था. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज लोकेटेड नियर द गिर ऑफ गुजरात. ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो. एंड इट द टेम्पल हैज बीन मेड थाउजेंड ऑफ टाइम, rebuilt थाउजेंड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पीरियड. ठीक है, एंड ये जो पर्व है ये आपका मनाया जा रहा है 8 जनवरी से 11 जनवरी तक. ठीक है, so architectural style. Okay, so in this we can again see Somnath temple के according. So temple से related आपसे again they can ask you extended question like in which style this Somnath temple has been constructed. Like we have a जैसे कि हमने अपने art and culture वाले क्लास में बहुत बार पढ़ा है the about the design of temples कि वो कौन से डिजाइन को बिलोंग करते हैं, whether they are आपके नॉर्दर्न स्टाइल विच इज योर नगरा स्टाइल एंड वेदर दे आर ऑफ साउदर्न स्टाइल विच इज ऑफ द्रविड़ स्टाइल, या तो फिर मिक्स विच इज अ वेसरा स्टाइल. ठीक है, सो इस बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो आर्किटेक्चर के ऊपर भी आप देख सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. लार्जेस्ट एरी सिल्क स्पिनिंग मिल इन नॉर्थ ईस्ट ओपन एट खारुवाजा. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे एग्जैक्टली आपको की पॉइंट मिल ही गया है इस न्यूज के बारे में that they may ask you about the एरी सिल्क. ठीक है, apart from that where it is located. ठीक है, so ये मेन पॉइंट है जो कि आप इस वाले न्यूज से उठा सकते हो. ठीक है, एंड अगेन इफ वी रीड अबाउट एरी सिल्क, जैसे कि मैंने पूछा कि मैंने आपको बोला कि एरी सिल्क मे बी द की पॉइंट हियर. सो दे may also ask you some question related to एरी सिल्क, जैसे कि this is also known as peace silk. Why do we call it peace silk? ठीक है, तो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच एवरीवन प्रिपेयर्स. तो ये थोड़ा बहुत
आप तैयार करके जा सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन सी वेयर इट इज लोकेटेड, दैट इट इज लोकेटेड इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। सेटअप बाय द नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो दिस पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। द प्लान कवर्स एन एरिया ऑफ 12,916 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये इतना factual thing is not very important, relevant, but you can just read it so that कि आप अगर थोड़ा सा approximate भी बताना हो, you can talk about it. But generally interview में इतना ज़्यादा to the point and exact figures नहीं पूछा जाता, ठीक है। So you can just read it. It is the largest silk spinning mill in the northeast with 960 ring frame spindle and a production capacity of 450 kg per day, ठीक है। So these are the important points regarding it. तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बोला कि एरी सिल्क के बारे में पूछ सकते हैं आपको, where it is located, that is a important point, या तो फिर आपको वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं where is खरवाजन is located, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का तैयारी या तो फिर इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। Okay, so we have completed our current affair for today. So we have been continuing this so that the people and the candidates who are preparing for interview guidance program or who are preparing for the interview itself, they can just so that कि उनका जो जर्नी है वो थोड़ा सा इजी हो जाए, कि आपको बार बार न्यूज़पेपर उठा के दोबारा से नहीं पढ़ना पड़े। So I hope the current affair will be helpful. If you need any extra thing to add on, so you can just give us a comment down. Thank you for today's session. We will see you in the next one.